Very good afternoon. So, guys, let's start this session. So, कहाँ पे है? I haven't shared my screen. ये आज संडे है करके शायद थोड़ा बच्चे कम आए, बट द शो मस्ट गो ऑन. कमिटमेंट इज कमिटमेंट, है ना. कल थोड़ा सा मेरे सिस्टम के साथ इशू हुआ था, एल्स आई वुड हैव कंटिन्यूड विद द सेम. सो गाइस, हम लोग आ जाए अपने इस पे. वैष्णवी एंड अलायना, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. ग्रेट. सो मैं आप लोग का एक बार, वैष्णवी आ जाओ. हाँ, ग्रुप में थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए what I will be doing is I will be submitting just a minute. I will be submitting the this thing screenshot so that they understand that the session has started, and we will start off with the session. So today on Sunday you haven't gone to any place? Yes, guys. I'll No, be sir. leaving after the session. Sorry. I will be going after the session Oh, well, to my nanny's house. where is your nani, beta? Mahendra Nagar, that side. Mahendra Nagar. बढ़िया. Good. Dada, nani. It's really good. Wonderful. एक मिनट. हाँ. Oh, sorry, not this photo. You won't like this. मैं थोड़ा सा दूसरा वाला लेता हूँ. Perhaps थोड़ा सा सामने सब देखो. So now I am putting this on screen now. Sorry, on the group so that people get to know about the live session. So yes. So let's, है ना? I think I am pretty audible to all, right? Yes, sir. Yes, sir. Let me put off annotation because last time that happened. Uh, in a nutshell, what we have found. एक बार देख लेते फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, राइट. लास्ट टाइम वैष्णवी अलैना आप लोग थे क्या सेशन में? आई डोंट Yes, sir. रिमेम्बर. Yes, sir. बोथ ऑफ यू वर देयर. Yes, sir. Yes, sir. आज फिर ये क्यों नहीं आए? क्या बोलते, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? एनी आइडिया? आई विल बी पुटिंग माय लैपटॉप ऑन दिस थिंग. ये थोड़ा सा ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन बेटा? Yes, sir. चल अब Yes, स्टार्ट. sir. लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी. So pair of linear equation in two variables takes care of three parts, as I told you earlier as well. First is, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है, राइट? कि दिख रहा है आप लोग को? ऑल ऑफ यू वर एबल टू सी द स्क्रीन क्या बेटा? एक बार फिर से बताओ. No, sir. Now it's Visible.
Not visible. Just give me a minute. What happened? Let me check out. My cursor is like, मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ ना YouTube लाइव में what is happening so that I understand. Right. Now I think it's visible. ऐप दिख रहा है क्या? देखो तो इट इज नॉट विजिबल ना। वीडियो भी देखो तो मेरे हिसाब से वीडियो भी नहीं दिख रहा No, sir. है ना? It is blackout on the live session as well. Yes, sir. Just just hold on. I wonder what happened. ये टेक्निकल इशू कल भी था जिसके मैं नहीं ले पाया था और आज फिर से टेक्निकल इशू हो रहा है बट वी विल मैनेज समहाउ, है ना? ओके, मैं समझ गया। वीडियो सेटिंग, समथिंग वेंट रॉन्ग ना, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ द वीडियो सेटिंग। कैसे गायब हो गया है? वीडियो दिख ही नहीं रहा। वीडियो एडवांस्ड, this Zoom is trying to do something which I'm not able to figure it out. तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? पहले ये बताओ। Yes, sir. हम्म। पर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? No, sir. और वीडियो भी नहीं दिख रहा है, राइट? Yes.
आई थिंक अब दिखना चाहिए, लेट मी चेक आउट। सामने जा, यू कैन। वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। टेंशन मत लो, आज का बहुत कूल सेशन रहेगा, बिकॉज मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लाइक के क्वेश्चन लेके छोड़ दूंगा। मैं लाइक दिस। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? प्रिटी ऑडिबल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब शुरू करते हैं, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। सो गाइस, वी हैव सीन that the entire thing that I taught to you was basically what is the introduction of linear equation. So I taught you linear equation is one, whose degree is one, whether it is a universal equation of into one variable or two variable, the degree is always how much, but the degree is always one, right? And we have studied solution of linear equation apart from this introduction. Then we have also studied that the application, that is application of linear equation. The solution of linear equation was basically elimination method, wherein we eliminate by doing some arithmetic operation into equations and making one coefficient same of one of the variable and getting the other. Then we have graphical, that we have drawn the graph, है ना? By drawing the graph, we can find the point of intersection. And there is something called Cramer's rule, which I taught you how to find out the Cramer's rule. है ना? Cramer's rule भी हम लोगों ने देखा, है ना? उसका easy method भी हम लोग देखा। याद आ रहा है ये सब देखा था? अब लीनियर Yes, sir. इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग थोड़े ऐसे क्वेश्चन लेंगे। Of course, there was condition for linear equation in two variables, if you remember. Those conditions were, है ना, those conditions were a1 by b1, a2 by b2, this I taught you. मतलब the condition was like this, if there are two linear equations, देखते तुम लोग को याद आता है, if there are two linear equations, है ना, two linear equations, one is say uh, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So, what did I teach you if you remember? This is 1, this is 2, then there are three aspects of it. What are the three aspects? These two lines, this is line 1, this is line 2, would be intersecting, right? Line 1 and line 2 could be intersecting. So, they intersect at a point P. So, when this happens, what is the condition, guys? A1 by A2 is not equal to B1 by Y. ये तो पता होगा ना, है ना? Yes, sir. Then in another case, these two lines are parallel to each other. They go parallel to each other. Sorry for this, it has to be parallel, right? So they go parallel to each other. So this is line 1 and line 2. In that case, what is the condition, guys? If you remember, A1 by A2 equal to B1 by B1 by B2. is not equal to C1 by C2. C1 by C2. And third condition was, if you remember, there are two lines again, line 1 and line 2. I'm sorry for this. This cannot be the third case because you know what mistake I made. So this is say line 1, right? And over it,
आई डेलिबरेटली पुट, आई एम सॉरी, आना चाहिए बराबर उसके ऊपर, इट इज लाइन 2, राइट? So they are overlapping. Since it is intersecting at a one point, so it has one solution. And since it has solution, so this is also known as consistent. क्या बोलते हैं इसको? Consistent. इसके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास क्या सॉल्यूशन है गाइस? नो सॉल्यूशन. No solution. नो सॉल्यूशन, दैट इज जीरो सॉल्यूशन. सो जिसके पास नो सॉल्यूशन है उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट. क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट. और जिसके पास कई सारे सॉल्यूशंस हैं उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को भी क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. और सुनो ध्यान से, ये सारे केसेस में ये वाला जो केस है, इसका केस क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2. c2. तो ये वाला केस भी होगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं. यहाँ पे नॉट इक्वल टू और यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू. यहाँ पे ए और बी के बीच में नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बी और सी या ए और सी के बीच में नॉट इक्वल. These are the three cases. Please take a screenshot of this. Then we will start off with the further questions. Is this done? The screenshot beta? Done, sir. Okay. Now let's understand the boards का question. Typical boards का question. So we will start off with the वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन. है ना? याद करो अपन एप्लीकेशन उतना फर्स्ट गो में सिर्फ बेसिक पढ़े थे, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन नाउ. है ना? सो हियर कम्स द एप्लीकेशन. सो देयर इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. सो द फादर्स एज is 6 times. So whenever we have such question, na, I will show you a very beautiful way of doing this. Whenever we have such questions, what we do is we draw a table. What we do is, guys, we draw a Table. table. And the table will help us get all the answers at one shot. How come? I will show you. है ना? So the father's age is 6 times his son age. So यहाँ पे हम लोग जो भी देखेंगे, मतलब जो भी आइटम रहेगा, so suppose फादर जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रेजेंट एज की बात आती है ना, तो उसका ना हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट एज. क्या लिखते हैं? प्रेजेंट एज. तो फादर का प्रेजेंट एज को हम लोग ले लेते हैं एफ, है ना? और सन के प्रेजेंट एज को क्या ले लेते हैं? एस. तो तुम्हारे मैथ्स में उसको एफ और एस के जगह इन्होंने क्या बोला है पता है? इन्होंने एक्स और वाई बोला, है ना? सो फादर को ले लेते हैं अपन क्या? एक्स. और इसको क्या ले लेते हैं? वाई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर 4 years hence. So 4 years is after, yes, after 4 years. So after 4 years मतलब ये क्या हो जाएगा? x+4 and ये भी क्या हो जाएगा? y+4. So let us understand APGC. APGC as per given condition. So what is as per given condition, guys? We have that 4 years hence age of father. Now what is 4 years after age? After 4 years, what is age of father? This x+4 will be. This will be responsible for equal to sign, right? Will be how much? 4 times. So 4 times of the 4 into the age of his son. That is age of his son y+4. बट ये हो गया दूसरा कंडीशन. पहला कंडीशन कुछ और था. द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज. So father's age, matlab x, is 6 times what? Y. This is equation number 1. Am I right? Yes, sir. So the solution goes very simply now. We can easily see, है ना? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क के लिए. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पुट वन in what? 2. Am I right? Put 1 in 2.
So what we get, guys, clearly, so this will be 6y plus 4, इसको अंदर घुसाओ, 4y plus 16, तो 6y इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, देखो y विल बी इक्वल टू 6। तो बच्चे का एज कितना है? 6। तो फादर का एज कितना होगा? x इक्वल टू 6 इंटू वाई, 6, तो कितना हो जाएगा? 36। So which option is correct? C. Is this understood, beta? Yes, sir. Please take a note of this. हो गया, इसको अच्छे से लिख लो, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो बहुत जोरदार होते हैं। आई विल श्योरली टेक दोस क्वेश्चंस एज वेल। Done, sir. डन। व्हाट अबाउट फेस्टिवल? डन ना? Yes, sir. तो लेट्स सॉल्व। नाउ लेट अस solve such questions with the help of conditions, है ना? हम लोग ये क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कंडीशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये है 57 क्वेश्चन, बोर्ड में अपीयर हो चुका है। तुमको पता चला क्या? एक न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज मैं भी शेयर करूंगा आपके इसमें भी, कि पूरा जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो पूरा सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करने वाला है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? किसने No, बताया? Yes, sir. sir. इसका मतलब तुम 11th 12th में पूरा सीबीएसई पढ़ने वाले। एंड आई हैव बीन टीचिंग सीबीएसई सिंस 30 इयर्स, है ना? ऑल्दो आई हेल फ्रॉम स्टेट बोर्ड। सो अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p will the following system of equations have no solutions? So try to understand, my dear students. The following system of this is one equation, and yes, class, this is another equation, right? So immediately, what is the way of solution? The first thing from equation 1 and equation 2, what I'm going to do is first find out immediately ये क्या है आपका a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1. So you just simply write down a1 is 2p minus 1, b1 is, yes class, p minus 1, c1 is 2p plus 1. Similarly, we have, yes class, this is a1, this is, sorry, this is a2, this is b2, and this entire thing is what? c2. So what is a2 beta? 1, है ना? What is b2? Come on, 3. And what is c2? -1. Right? सबको समझा कि नहीं समझा ना? समझा ना? क्या बताया? Yes, sir. यस ना? इट विल हैव नो सॉल्यूशन। तो मैंने अब भी बताया था, नो सॉल्यूशन का मतलब ये है नो सॉल्यूशन, राइट? मतलब दिस इज द कंडीशन, a1 by a2 equal to b1 not equal to c1 by c2. Do you remember? Yes, sir. So let's understand this, solve this rather with the help of the same. So now the condition for no solution, for no solution. So what is the condition? Yes, class, a1 by a2 equal to b1 by b2, and it is not equal to c1 by c2. Agreed?
Yes, sir. So Yes, what sir. is A1 by A2, guys? This is 2p minus 1, है ना, ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, so कम हो गया, upon A2. A2 is 1 equal to V1, that is p minus 1 upon 2p plus 1, which is not equal to C1 C2. That is, it is not equal to 2p plus 1. मैंने कुछ गलती किया क्या? A1 by A2 equal to V1 by V2. I'm sorry for that. है ना, मैंने एक गलती किया, दिखा क्या गलती है? This has to be how much, beta? 3 3. Very good. And this is 2p plus 1 by minus 1. Now, minus if 1. I equate these two, you can easily see. है ना? If I equate these two, then I will be able to solve. So this will cross multiply. So this will be 6p minus 3, and this is p minus 1. This will go here, this will go here. So that will be 5p, because 6p minus p is 5p, and this is minus 1 plus 3 is 2. So p is equal to 2 by 3. 2/3. For this, it will have no solution. Got it, beta? This is just 2 Yes, sir. marks. Please take a note of this. I will rather थोड़ा सा छोटा कर दूंगा. इनका p अलग कैसे आ रहा है ना? समथिंग वेंट रॉन्ग क्या? इनका p अलग आ रहा है, अपना p आ रहा है 3/2. A1 बराबर निकला P1 बराबर C1. ओ, C1 जो है वो माइनस, चलो ठीक है, C1 अपन ने ऐसा ले लिए. C1 जो है उन्होंने माइनस क्यों लिया? उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो इट हैज टू बी माइनस. सॉरी फॉर द मिस्टेक. फिर हम लोग ने जो किया 3 2 6 माइनस 3p. तो 6 में से फिर ये तो बराबर आया 2/3, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं. इनका आंसर आ रहा है आफ्टर इक्वेटिंग 3p-1. अच्छा, इनका 3 और 1 चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? इनका 3 इधर है, 1 इधर है, तो ऐसा क्यों हुआ? A1 by A2. A2 इनका 3 है. ओ माय बैड, व्हाट अ बिग मिस्टेक आई हैव डन. बताओ, देखो, दिस कैनॉट हैपन इन बोर्ड. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आप देख सकते हो क्या मिस्टेक हुआ, बताओ क्या मिस्टेक हुआ. हु विल टेल? आई डिड अ मिस्टेक. कि ये है A1, मतलब सॉरी A2. एट, जिसको मैंने ये ले लिया था, B2 ले लिया था, और B1 क्या है बेटा? B2 क्या है? सॉरी, 1. समझा ना? Yes, समझ रहे हो? sir. तो B2 क्या है? 1. So there will be change here. Extremely sorry for this. There will be change here. As in, यहाँ पे क्या चेंज होगा? P-1. इसके नीचे 3 आएगा, इसके नीचे 1. अब इस पूरे बॉक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना? ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2p-1 इक्वल टू 3p-3. सो 2p इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो -1 plus 3, 2p, 3p minus 2p is p. Therefore p comes out to be how much, beta? 2. I'm sorry 2. for that. So p comes out to be 2. Okay, answer. इतना छोटा मिस्टेक था, बट कितना पावरफुल मिस्टेक था, तो इसलिए बहुत अच्छे देखना. x दिया है कि y, और ये माइनस क्यों आया? why did I wrote minus here? Because ये इधर जाएगा. It should be of the form a1x v1y plus c1 equal to 0. तो वो इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा. समझ में आ रहा है वैष्णवी, अलाना? Yes, sir. Yes, राइट. प्लीज टेक a screenshot of this. Please don't write this because it will take up our time, bit of our time. Done, sir. Done now? वैष्णवी done? Screenshot? yes, sir. ओके, fair. अब हम लोग आते हैं थोड़ा से वर्ड्स प्रॉब्लम में. वर्ड्स प्रॉब्लम में मेरे को बोर्ड स्ट्रीम्स वाला मिल जाए. ये एज वाला तो अपन ने कर लिए. यस, गॉट इट. यस, डाउनस्ट्रीम, ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन. तुम लोग को डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता है ना? सुना है? Yes, sir. सो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है, पहले वो सुन लो.
कि इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये नदी है और इसके ऊपर एक बोट है और ये पर्सन है जो बोट को चला रहा है, राइट? नाउ दिस नदी, दिस बोट विल हैव अ स्पीड b, right? And this stream will have speed either this way s या फिर वो इस दिशा में भी जा सकते हैं s। तो जब बोट और स्ट्रीम एक ही दिशा में जाती है तो उसको ज्यादा स्पीड मिलेगा, मैं राइट? तो ज्यादा स्ट्रीम को क्या बोलेंगे? देखो बोट तो एक ही दिशा में जा रही है, वो है ये दिशा। तो इस केस में बोट और स्ट्रीम एक ही दिशा में जा रही है तो उसको बोलेंगे, जैसे डाउन पे तुम साइकिल चलाते हो तो जल्दी ज्यादा स्पीड मिलती है ना, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है याद कर लेना, बी प्लस एस, समझा? Yes, sir. तुम बोलोगे सर अपस्ट्रीम, सिंपल। अपस्ट्रीम मतलब चढ़ाई चढ़ते वक्त तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा अलग होती है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो और चढ़ाई की दिशा नीचे की ओर ज्यादा, मतलब नीचे की ओर ढलान होती है। सो दिस इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज बी माइनस एस। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? Yes, डाउनस्ट्रीम इज sir. बी प्लस एंड अपस्ट्रीम इज बी माइनस, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ दिस क्वेश्चन, है ना? वेरी इजीली, a man can row a boat downstream 20 kilometers in 20 hours. So whenever we have such question, हमेशा क्या करना, एक सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ, ऐसा टी on time. Generally distance is in kilometer and time is in hours. It could also happen that it could be meter per second as well. Getting my point? Yes, sir. टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखना, ऐसा टेबल बना लेना और इतना आसान हो जाएगा। यू मस्ट सी नाउ कि क्या होता है, एक आदमी है ना, अ मैन, सो देयर इज अ मैन हु ट्रेवल्स डाउनस्ट्रीम। सो मैं ये टेबल में यहाँ पे डी फॉर डाउनस्ट्रीम लिख रहा हूँ, आई हैव रिटन डी फॉर डाउनस्ट्रीम, और यहाँ पे एस फॉर एस फॉर अपस्ट्रीम, है ना? सो अब मुझे बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। चलिए 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं डाउनस्ट्रीम में, 20 किलोमीटर इन 20 हाउ मेनी kilometers. आवर्स? 2 hours. 2 hours. So what is speed? Speed is distance by time. So 20 by 2. So 22 by 2, ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 10। 10. और ये अपस्ट्रीम क्या हो जाता है? अपस्ट्रीम ए, ये डाउनस्ट्रीम, ये एस क्यों लिखा? ये अपस्ट्रीम का यू होना चाहिए, राइट? आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस हैज टू बी, एक मिनट, हाँ, इसको कैसे मिटाया जाए यार, फट से पूरा मिट जाए। चलो अपस्ट्रीम लिखा है वहां पे, है ना, ओवरराइट किया, सॉरी फॉर दिस इज अपस्ट्रीम यू, है ना, दिस इज अपस्ट्रीम यू। सो इट ट्रेवल्स व्हाट, 4 kilometers in how many hours beta? 2 hours. So 2 4 hours. by 2. So this is 2. what's plus 2. 2. Now also we have to find this his speed. His speed मतलब man का speed. So let us understand that speed of a man. So speed of a man is as good as speed of the boat because he is the driver of the boat. He is driving the boat. So speed of the man को हम लोग ले लेते हैं क्या बेटा, है ना, x। और स्पीड ऑफ क्या, स्ट्रीम, ऑफ द स्ट्रीम को क्या ले लेंगे बेटा, बोलो, y। So this is x what? Remember this has to be x kilometer per hour and this is y kilometer per hour. Agreed? Yes, sir. So let us understand what we have to find. We have to find speed of the stream. So I know up, देखो downstream is given by, ये देखो ये formula is b plus s, and upstream is given by b minus s. From here, can't I conclude what is b and what is s? This is boat and this is stream, right? So what is the conclusion that can be drawn? B plus s, simply x plus y equal to downstream. Downstream speed is what? This 10 is downstream speed, that is 10. Agreed? And what else? B minus s. B minus s is what beta? X minus y is how much beta? It is given to be, remember,
this speed is either downstream or what? Upstream. We are talking of speed. Here we are talking of speed. So therefore, the conclusion is we can easily see y cancel, adding both equal to 12. Therefore, it comes out to be 6. So आदमी का speed कितना हुआ? 6 किलोमीटर पर hour. But we have been asked to find stream. So stream का निकालने क्या करेंगे? X minus y equal to 2, but x is 6. Therefore, y comes out to be how much, beta? Y comes out to be, wait, wait. Therefore, y comes out to be how much, guys? Y comes out to be, wait, wait. Y comes out to be 6 minus 2. That is what? 4. So what is the speed of stream, guys? Speed of stream is 4 kilometer per hour. Is this understood, guys? All of you? Yes, Yes, sir. sir. है ना? It was interesting as well, right? तो इसको ना हम थोड़ा सा और बैक करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं. So please take a note of this. Again, you can take screenshot rather, because अपन जितना और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और अच्छा. ये मैंने बेस क्वेश्चन लिया. मुश्किल से कितने मार्क्स के लिए आएगा बताओ तो ये क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला. 3 or 4. 3 मार्क्स, 3 और 4, either of this depends. वो वैल्यूअर के इस पर डिपेंड करता है. कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं. ट्रस्ट में ऐसा होता है. सीबीएसई स्टेट. Let me know once you are done. हाँ सब क्लियर हुआ ना बेटा आप दोनों को? Yes, sir. हम्म. Done or not? Sir, So you are done. writing the done na? What about Elena? Done, sir. Acha. Are you writing the concept? No, sir. Okay, fair. So guys, concept is this much. How much? Just a minute. Let me show you. What is the concept? This much is the concept. Right? जो मैंने बताया. I repeat. थोड़ा ढंग से. ये right. So, ओहो क्या हो रहा है पता नहीं. हाँ. So this much is the concept. ये 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 और ये. So this much is the concept, right? So now let's understand more of it. है ना? Let's understand more of it. तो अब हम लोग आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे. Let us find out the level of that question. है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस जमते हैं ना तुमको कि नहीं? सच बताओ. No, sir. चलो एक करा देता हूँ. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होता है. आज सुमेरा क्यों नहीं आई पता नहीं. If this is 96 question, if 2 is, अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फ्रैक्शन सॉल्यूशन जैसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो अपन अज्यूम करेंगे लेट दैट फ्रैक्शन एफ. तुम पूरा फुल फॉर्म लिखना. दी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो एक्स अपॉन क्या लेते हैं अपन? वाई. where x is numerator and y is denominator, right? Now let us understand if 2 is subtracted from the numerator. So condition number 1, APGC. So I am subtracting 2 from the numerator, है ना? And 1 is added to the denominator. So what does that fraction becomes, beta? 1 by 1 by 2. this is part 1, right? This is equation 1. Now 2, from here we can easily generate now.
दिस इज, अब मैं इसको 2 को थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ। अब यहाँ से तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्या, ये 1/2 को क्रिस क्रॉस करके, दिस इज 2x-2 इक्वल टू y+1, and therefore the final equation thus came out to be is 2x-4 into y+1. Therefore 4 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, therefore 2x minus y will be equal to 5. right. So this forms equation number 1. Similarly, you could have done what you could have done by guys. You could have done the second equation as, but when 4 is added to the numerator. So when 4 is added to the numerator, and this time 3 is subtracted from the denominator. So then we have 3/2. So again we crisscross. So this becomes directly correct. 2x the 2x, 2 4 the 8, 3y minus 9. Now try to understand. ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, थोड़ा वाहियात दिखेगा बट आ तो गया। 3x-1 -8 -9, मैं एक स्टेप खा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, -70। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now how to get this? There are so many ways. Cramer's rule, this, that. I think the best part is we solve simultaneously. So if I put in front of you equation number 1 like this, 2x minus y equal to 5. And I put equation number 2 like this, 2x minus 3y equal to y. So simply what I'm going to do is I'm going to subtract this, minus plus plus. This will cancel. Plus 3y this is 2y. 2y, right? Equal to how much beta? Plus 17 this. That comes out to be how much? 22. 2. So 2 11s are. So y comes out to be how much? 11. The 11. moment I put y, if I put this, oh, if I put this y in equation number 1, that is this, then we get 2x minus 11 equal to 5. That means what we have beta? That means 2x will be equal to 16 and x will be equal to how much? 8. Simple. Got it, all of you? Yes, sir. Please take a look at this. So done. Done, sir. Shall I move? Done. Right. Now, let me take just a minute. Huh? Okay. Let me take few more questions. एरिया वाइज, एज वाइज सब क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, मैं तुमको एक खतरनाक क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, जो थोड़ा सा इट टेक्स टाइम परसेंटेज वाइज। अभी देखो,
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 104. Let us aware of all variations that can be asked in a board exam, है ना? तो 100 कहाँ क्या? हाँ 104 दिख रहा है सबको, right? So we have when 6 boys were admitted and 6 girls left. मतलब कितने बॉयज एडमिट हुए और कितने बॉयज लेफ्ट हुए, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया. सो व्हेन 6 बॉयज वर एडमिटेड एंड 6 गर्ल्स लेफ्ट. तो ऐसे करने से मतलब हुआ टोटल. जब भी इसका मतलब हो 6 बॉयज मतलब क्या, किस में से? सो हम लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे एज यूजुअल. मैं टेबल वाइज थोड़ा सा जाता हूँ, है ना? सो वी मेक अ टेबल लाइक दिस. सो यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स, राइट? और उसके नंबर्स. तो बॉयज के नंबर्स कितने ले लेते हैं, एक्स. और तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया कितना, एक्स प्लस वाई, Y. है ना? सो try to know the percentage of boys increased from. So see, percentage of boys was 60% and percentage of girls was what? 75%. No, sorry. Percentage of boys 60% and percentage of boys, increased percentage of boys. This is again boys. Let me erase this. This is again boys, but this is increased percent. मैं shortcut लिख रहा हूँ, उसको full form लिख रहा हूँ. So earlier it was 60%, है ना? तो पहले इनिशियली, सो आई से इनिशियली कितना था, 60%. बाद में बढ़ के कितना हो गया बच्चा, फाइनली 75%. तो मुझे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स लिखा. देखो क्या क्वेश्चन है ना, जबरदस्त. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं. देखो नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया कितना है, एक्स. नंबर ऑफ गर्ल्स वाई पता चल गया, तो पता अज्यूम किए. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ व्हाट, स्टूडेंट्स, है ना? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इफ यू सी केयरफुली एंड दिस इज द 60% पहले थे, पहले 60% पे थे बॉयज, और अभी बढ़ के कब बढ़े, जब 6 बॉयज एडमिट हुए और 6 गर्ल्स लेफ्ट हुए, किस में से, एक्स प्लस वाई. मतलब समझ रहे हो, टोटल Yes, sir. एक्स प्लस वाई बच्चे थे, जिसमें से 6 बॉयज को एडमिट करना पड़ा और 6 गर्ल्स को छोड़ दिया गया. तो ये सीन क्रिएट है. क्वेश्चन क्लियर है? तो सवाल Yes. ये 60% क्या शो करता है, इट इज नथिंग बट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, है ना, इनटू 100. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉयज, इफ यू सी केयरफुली, है ना? सो एक मिनट, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉय, क्यों नहीं आ रहा, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉय. सो फ्रॉम हियर इट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इनटू 100 is given to be 60, right? And at the same time later it became what, 75%. This is condition number one. That means 0 0 cancels. Come on, this is 5 2s are 10, 2 3s are 6. So what is the equation thus form, 5x equal to 3 times x plus y, right? So 5x plus x plus y matlab 5x equal to 3x plus 3y. So that means 2x minus 3y will be equal to 0. Agreed, all of you? Yes or no? Yes, sir. So this has become equation number one. Now they say 75%. 75% मतलब increase. तो increase कैसा हुआ देखो, हाँ, try to understand. ये 75 कौन सी एक्टिविटी से, 6 लड़के जुड़े और एक लड़का, क्या हुआ, 6 लड़कियां कम हुई. तो टोटल बॉयज कितने थे बेटा, एक्स. उसमें कितने लड़के जुड़ गए, 6 बॉयज वेर एडेड. और प्लस कितने गर्ल्स रिमूव हो गए, है ना, रिमूव. तो अब टोटल बॉयज कितने हुए, पहले एक्स से, एक्स प्लस 6. और इसका कैलकुलेशन कैसा होगा वो भी देखो, इनटू व्हाट, 100. और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 75%. द सेम, दिस इज वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
So 6 cancels. Now 75% नहीं लिखते बेटा, 75% का परसेंटेज का अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? 100. So see, try to understand. This is 25 threes are, तो 3 25s are 25 fours are, तो अब 4 को अंदर घुसाओ, तो 4x प्लस 24 और 3 से इधर करो, तो 3x प्लस 3y. तो अब क्या हो जाएगा बच्चा? ये इधर जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा क्या? और ये इधर जाएगा. 3x क्या हो जाएगा बेटा? 4x माइनस एक्स इज एक्स माइनस 3y इक्वल टू -24. इक्वेशन नंबर बताओ बच्चा कौन सा हुआ? इक्वेशन नंबर 2. समझा यहाँ तक? तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिनल बॉयज एंड ओरिजिनल गर्ल्स निकालना है ना? तो मुझे ये दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा? सॉल्व. तो ठीक, इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 रख दूं. x माइनस 3y इक्वल टू -24. व्हाट आई एम गोइंग टू डू? कम ऑन, कौन बोलेगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट. कम ऑन, ये दो इक्वेशन को ऐड Subtract. करना है कि सब्ट्रैक्ट? यस, सब्ट्रैक्ट. वेरी गुड. सो सब्ट्रैक्शन चेंजेस द साइन, माइनस प्लस. So 2x minus x is x. This cancels, and this is plus 24. तो नंबर ऑफ जो बॉयज है वो कितने थे? 24. Now where do I put this 24? I simply put this in equation 1, and equation 1 is 2x minus 3y equal to 0. This is 2 into 24 equal to 3y. 3 8 are 24, therefore y comes out to be 16. गर्ल्स कितने थे? बॉयज थे 24 एंड गर्ल्स कितने थे? 16. समझा सभी को? Yes, yes, sir. प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस अमेजिंग क्वेश्चन, है ना? सो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ so that you get to write it properly. Write it down now. The question is this. This is the simple question, and this is the solution. देखो, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी बीच बीच में ना ऐसे सेशंस होंगे तुम्हारे, बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड पेपर से डिस्कस करेंगे. तुम लोग का कोर्स कब चेंज हुआ था, कुछ याद है? डिड योर टीचर टेल यू व्हेन वाज योर कोर्स चेंज्ड लास्ट टाइम? No, sir. No, sir. तुम लोग पास्ट ईयर पेपर्स नहीं देखते क्या? पी वाई क्यूज या पी वाई पीज, ये पास्ट ईयर पेपर्स दिखना चाहिए क्योंकि पता है उससे ना पता चलता. वैसे आ, मैं आपको दिखा दूंगा, और अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है तो आप मुझे भेज देना, मैं उसमें से डिस्कस कर लेंगे. दोनों हो सकता है. आई हैव द कलेक्शन. मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा मेहनत करके पास्ट ईयर पेपर जुगाड़ो ताकि उसका इंपॉर्टेंस रहे. मैं तो कभी दे सकता हूँ, आईता हो जाएगा रेडीमेड. ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं किया ना परसेंटेज वाला बेटा आप लोगों ने? No, sir. Sir. सो बी रेडी कि कुछ भी कभी भी कोई भी सरप्राइज हो सकता है. अपन पढ़ के गए टाइम 10 स्ट्रीम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन पूछ लिया, परसेंटेज वाला क्वेश्चन. तो जितने भी मोस्ट लाइकली क्वेश्चन थे वो मैं ले रहा हूँ. What must have happened to Tejashree and this girl? Sumaira, कुछ आइडिया? No, sir. No, sir. Maybe they are enjoying their Sunday.
वो तो मैं एक्चुअली संडे इसलिए भी नहीं रखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि एक संडे मिलता हो डिस्टर्ब हो जाए, बट ठीक है, करना पड़ता है इसे। इट इज डन, लेट मी नो। Done, sir. वन Sir, मोर done. क्वेश्चन, डन। बस एक और क्वेश्चन लेके हम लोग इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डिमांड है क्या, किस में से बताओ क्या? ये तुम्हारे आ, क्या बोल सकते हैं, टेंथ के बुक में से कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो तुम करवाना चाहते हो मुझसे? बोलो। इफ यू फील लाइक यू कैन ओपन अप योर बुक, है ना, एंड यू कैन टेल मी कि सर ये वाला करा दो। Sir, question number 6 of problem set. क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम सेट 1। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 दिस वाला। No, sir. तो ये तो मेरे इसमें वही दिखा रहा है, प्रॉब्लम सेट 1 में। Sir, scroll more, it is down. जस्ट डाउन। ओह, This one. दिस वन, राइट, वंडरफुल। सो लेट अस डू इट, है ना। आई विल रादर क्रॉप इट and put separately, just in now. Let me crop this. Why this asterisk mark has been given? Koi idea? Why this star mark is given? Very important question. That's right. Yes, sir, maybe. Maybe. Okay. So let's see this question. एक second, हाँ. Just give me a minute बेटा, हाँ. मैं इसको ना scroll down करके चलो, let's start now. So this is the question that you have asked me. I am pasting here. Oh, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको और बड़ा कर देते हैं, है ना? So this is the question that we have asked. Let's understand this. Places A and B are 30 kilometers. Whenever we have such question, we always prefer to draw the diagram. So there are places A and B are 60 kilometers apart. So I draw A and I draw B. And what is the distance between these two? It should have been straight line. This is 60 kilometers apart. How much, guys? 60 kilometers. Oh, sorry, not 60 kilometers. Sorry, 30 kilometer. 30 kilometers apart.
They are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. So there is a person called Hamid. So Hamid travels from A to B on bike. So there is a bike here and it is being कौन travel कर रहा है? Hamid from A to B. So this is the direction. At the same time, here Joseph starts from B. So this is Hamid. So rather than writing the bike, I should have written what beta? Hamid, because that is the differentiating point. So Hamid travels from A to B, whereas yes class Joseph travels from B to A. They meet each other after 20 minutes. So they keep on traveling, and finally, पता नहीं नीचे गया शायद देखो है ना एक बार देखो. So they keep on traveling and they finally meet at certain point. Am I right? They keep on traveling like this and they keep meet at a point. Suppose that meeting point is this. This point is the meeting point, say P. Got it? But how much minute they take? 20 minutes. But when 20 they minutes. meet here, it is how much, guys? 20 minutes. 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time, but in opposite direction, है ना, मतलब if Joseph would have started from point B, है ना, at the same time, मतलब यहाँ पे टाइम अगर इसका ये 10 बजे शुरू हुआ एग्जाम्पल, तो ये भी कितने बजे शुरू होगा? 10 बजे, या वाइस वर्सा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इस दिशा में जा रहा है तो हामिद वुड हैव caught him after 3 hours. हमें से उसको 3 घंटे बाद पकड़ा हो, मतलब आ, अगर वो 10 बजे शुरू करता तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना क्या करते, टेबल बनाते हैं हम, है ना. अब देखो टेबल क्यों बनता है, अब तुमको समझ में आ रहा है. दो पर्सन है, दो पर्सन का नाम क्या है? हमीद, और दूसरे का नाम क्या है? जोसफ. बराबर. दोनों बाइक पे जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है. तो डिस्टेंस जो है बिटवीन हमीद एंड जोसफ, दोनों क्या है? 30-30 लिख देते, 30-30 किलोमीटर. राइट. तो आ, अच्छा, उन लोग कितने मिनट बाद मिलते हैं? 20 मिनट्स. 20 मतलब minutes. अगर हमीद दोनों को 20 मिनट्स, मतलब दोनों को अब जब जब मिलेंगे, जब वो दोनों मिलेंगे एक साथ, है ना, हमीद की स्पीड को ले लेते हैं एक्स और जोसफ की स्पीड को ले लेते हैं वाई. जो भी होगा, लेकिन जितना टाइम हमीद को यहाँ पे पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम जोसफ को. कब? कैसे पता? क्योंकि दोनों जब सेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन लोग 10:20 में मिल रहे हैं, तो उसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, कि दोनों 10 बजे निकले, दोनों की स्पीड में फर्क है, दोनों को 20 मिनट लगा, बट जैसे 20 मिनट हुआ दोनों मिले. ओके गाइस कि नहीं? चलो मैं फिर बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. 10 बजे छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. ये दोनों कहाँ पे मिले? जोसेफ और ये पी पॉइंट पे ना. तो जब पी पॉइंट पे मिलेंगे, तो दोनों का टाइम सेम रहेगा ना. जैसे एक पॉइंट ए है और बी है ना, जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी. ये दो चीज है मेरे पास, राइट, इफ यू कैन सी, है ना. तो अगर ये दोनों चीज एक साथ जाके जब मिलेंगे, तो टाइम दोनों का सेम रहेगा ना मीटिंग पॉइंट का. ये समझो. Yes, sir. मतलब वो जब मिलेंगे, वैष्णवी अलैना ध्यान से सुनना, तो टाइम तो सेम रहेगा ना. टाइम जितना हमीद को टाइम लगेगा, इसको जितना टाइम लगेगा, इसको भी उतना टाइम लगेगा. दोनों अलग अलग टाइम मिलेंगे तो थोड़ी ना उस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे. तो टाइम रिमेन्स द सेम, मतलब टाइम इसको को भी टी मिलेगा, इसको भी टी मिलेगा. ये बताना था मुझे. और अब इसमें एक चीज है, अगर हमीद ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमीद ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया से एग्जांपल, तो जोसेफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डी 30 - डी. गॉट इट? इट विल बी Yes, sir. 30 है ना, सही है. 30 - डी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं. हाँ, ये हो जाएगा 30 - डी. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. बट अब क्या बोलता है कि इफ द जोसेफ हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, बट इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। अच्छा, अभी देखो क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन अलग है। ये मीट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट जोसेफ वुड इफ द जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, मतलब वो बी से शुरू किया होता, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए का मतलब क्या हुआ, ए की तरफ नहीं बढ़ने की जगह वो अपोजिट डायरेक्शन में गया होता। मतलब ये भी 10 बजे शुरू हुआ से ये भी 10 बजे, केस नंबर 2। लेकिन इस बार जोसेफ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, इस दिशा, ए की दिशा में, राइट। और हमीद कैसे ट्रैवल कर रहा है, वही दिशा। तो हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो हमीद ट्रैवल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो उसको कितने घंटे बाद उसको ट्रैवल पकड़ेगा, उसको यहाँ पे पकड़ा मान के चलो। तो यहाँ पे भी जे आया और यहाँ पे एच आया, दोनों जब आए एक साथ, तो कुछ कितने बाद देर बाद आया, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, 3 आवर्स। ये पूरा स्ट्रक्चर समझा क्या आप लोग को बेटा? यस सर। तो इसका लिख लो, जैसे लिखना हो गया उसके बाद तुम लोग क्या बोलते हैं, इसको 2 मिनट थॉट प्रोसेस दो, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। बट इतना लिख लो सब, चलो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस द वे आई हैव रिटन। बस लास्ट लास्ट टॉपिक। डन सर। ना, चलो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आई एम गिविंग यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं इसको पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। और ये दिस विल बी क्वेश्चन ऑफ द डे। So according to the first condition, this is the first condition and this is the second condition. So first condition देखते हैं हम लोग। Let's start. According to first, कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 30। So this is distance is speed upon time, right? यस सर। और दोनों को कितना मिनट लगा था, 20 मिनट, 20 मिनट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, देखो कितना सिंपल तरीके से अपन कर रहे हैं। यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ इक्वल टू दिस, and distance is speed upon time. So as you can see from here, speed is x by 20,
plus y by 20 equal to 30. But 20 was minute. So 20 by 60 करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले 20 by 60 मिनट मतलब 20 by 60 मतलब 1 by 3 1 by 3. Am I right? Yes, sir. So distance speed is equal to distance upon time. So distance equal to speed into time. I'm so sorry for that. So distance is speed into time. So this is nothing but speed of that is speed of क्या बोलते हैं Hamid multiplied by time. What is time? 1 by 3 and speed of this multiplied by this equal to 30. Therefore x plus y will be equal to 90. This is equation number 1. Is this okay or not? Yes, sir. Please take a note of this क्योंकि मैं इसको फिर बाजू एक मिनट इसको मिटा देता हूँ. Remember this is the fact. Speed distance is equal to speed into this is what has been utilized here. So अभी मैं और एक चीज कर रहा हूँ जो यहाँ पे रखता हूँ. हाँ, अभी अपन सेकंड कंडीशन को डील करेंगे. Now, as per the second condition, you can see what is happening. If the Joseph would have started from B at the same time, but in the opposite direction. Same time, but in opposite direction. को लगता है कि एक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ये वाला डायग्राम नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज का इश्यू तो है. मेरे को ऐसा लग रहा है. देखो हाँ फिर से लिखते हैं. ये ए ये बी. केस 2 को ये केस 1 ले लेते हैं और ये केस 2 सेपरेटली डील करते हैं. चलिए देखते हैं. तो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं. अभी अपन देखते हैं यहाँ पे कौन है हमीद और यहाँ पे कौन है जोसफ. सेम ही है बट अब इसमें क्या चालू है. इसमें टाइम का कुछ नहीं दिया था. इसमें टाइम मिलने का दिया था और यहाँ पे बोल रहा है वुड हैव इफ जोसफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. है ना. इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए. ये इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है इसलिए अपन इसको इग्नोर मारते हैं. तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसा ही होगा. है ना. ऐसे अगर शुरू करते तो हामिद इसको कितने घंटे बाद उसको कॉट करेगा बेटा. ये यहाँ पे जब मिलेंगे हम लोग इस पॉइंट पे आफ्टर हाउ मच आवर्स बेटा. 3 आवर्स. Yes. एग्रीड. तो अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देखो एकदम सिंपल रखते हैं हमीद. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ. व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ऑलवेज एज आई टॉट यू इट इज ऑलवेज फीड इनटू टाइम. So this is speed that is x multiplied by इन तीन टाइम. टाइम क्या है 3 घंटे. तो ये 3x हुआ. और इससे कितना किया जोसफ ने उतने ही घंटे में 3 घंटे में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस बेटा. y इंटू 3 एम आई राइट. आया ना. Yes, sir. हाँ. अब सवाल उठता है इन दोनों को अपन ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों का डिस्टेंस. अब यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से ऐड हो रहा है बट मेरे हिसाब से ये जो टूवर्ड्स ए बोला ना मतलब इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग ने इनिशियली जो बनाया था ये ऐसे करके बनाया था. याद करो. है ना. एक बार फिर से मिटाने दो. तो मैंने कैसे करके बनाया था. एक सेकंड ना. इसको मिटाने दो. इसको इसको और इसको. हाँ. अब देखो ध्यान से देखो. हाँ. ये ऐसा जा रहा है. दिस इज गोइंग लाइक दिस. और ये भी ऐसा जा रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं. तो डिस्टेंस क्या होगा जो है हम लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट. टोटल 30 है और वो जहां पे मिल रहे हैं वो 3 आवर्स में मिल रहे हैं मतलब इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. इस केस में ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सब्ट्रैक्ट. एंड द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब हमीद ने इतना ट्रेवल किया
और जोसेफ ने इतना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 30। तो हमीद 3x माइनस 3y विल बी व्हाट 30। अब समझा क्या हुआ कि एक बार और बताऊं, देखो हाँ, ये हमीद है, ये जोसेफ है, और ये 30 है। तो हमीद ने ट्रेवल किया किया मान के चलो यहाँ तक पहुंचा, जोसेफ ने ट्रेवल किया किया यहाँ तक पहुंचा। तो हामिद का डिस्टेंस कितना हुआ 3x, और इसका कितना हुआ 3y। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 30। अब क्लियर है? Yes, sir. तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 10। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 कैन आई पुट this one below this, and can I add them up? So y Yes, sir. cancel, 2x will be equal to 100, therefore x will be equal to 50. The 60. moment I get x, then if I put x 50 over here, then y comes out to be how much? 40. So this is the answer. थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू था, अच्छा क्वेश्चन पूछा ना। Is this okay, guys? Yes, sir. Please take a screenshot of this, and we are done for the day. अच्छा क्वेश्चन लिया आज, मतलब बोर्ड्स पे जितने वेरिएशंस है वो सब कवर किए। टफनेस लेवल थर्ड रिवीजन में और बढ़ेगा, बट इसके बीच पेपर डिस्कशन होगा, पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे चीज होंगे। सेकंड रिवीजन इज बिट लंबा वाला। याद रखो, जब अपन पहला सेशन लेते थे अपना 1 घंटे में क्लास हो जाता था, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे तक चलता है। समझ रहे हो? Yes, sir. So guys, once you have done this screenshot, then we are done. Actually ना इसमें कहा मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पता है क्या? ये जो टूवर्ड्स ए वाला बोला ना, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। फिर बाद में मैंने देखा कि मैंने जो पहला इंटरप्रिटेशन दिया था वही सही था, है ना? बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, देयर इज अ mess in this language perhaps, maybe I could not interpret, my bad, but still we solve it। देखो तो पीछे आंसर यही है क्या? Check out for yourself if this is the answer given at the back। Hamid's speed 50 kilometer, Joseph's speed 40 kilometer. So we are right, right? Yes, sir. That's pretty good. So guys, my program is not responding सही वक्त, since we are ending the session। एक बार तुम लोग फट से स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे आ जाओ। अगर वर्क नहीं किया तो we will end the session, है ना? क्योंकि my cursor is like showing waits time। Done, sir. Done। Great। So Alana is going to go to Nani's place and enjoy the Sunday, है ना? Yes, sir. And Vaishnavi is going to go at what place? Sir, I'm not going anywhere. Great. She's happy at home. So guys, I think I'm not visible. Perhaps. So let's end this session. Thank you. See you in the next class. Right? Take care. Bye bye. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Did you go to the class,